वेरियस स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस। आपका हेयर लॉस, अगर आपको बॉल्डनेस हो रही है तो आप किस स्टेज पर हो, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा एजुकेट करती हूँ। सबसे पहले, अगर आपको एक जनरलाइज थिनिंग हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर लॉस एक दिन में 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको एक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं आप, या सबसे पहले यूजुअली लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं या कोई अच्छा एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके सिर पर अगर बॉल्डनेस स्टार्ट हो गई है तो कितनी बॉल्डनेस में आप कौन सी स्टेज को बिलोंग करेंगे। तो अगर आप अपने दोनों कान की इस वाले कार्टिलेज, जिसको हम ट्रैकस बोलते हैं, इससे एक लाइन खींचें और उसके 2 सेंटीमीटर आगे 2 पॉइंट्स बनाए, वहाँ तक अगर आपकी बॉल्डनेस हो गई है तो उसको हम ग्रेड 2 बोलेंगे। सीधे ग्रेड 2 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेड 1 में बहुत मिनिमल हेयर लॉस, हेयरलाइन रिसीडिंग जस्ट स्टार्ट हुई होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 में दोनों ट्रैगस की लाइन खींच के 2 सेंटीमीटर आगे तक आपको हेयर लॉस दोनों साइड से एम शेप आना स्टार्ट हो गया। ग्रेड 3 में ये एम शेप डीप हो गया, यानी दोनों ट्रैगस से लाइन खींची अगर हमने आपके सिर के ऊपर से, उसके 2 सेंटीमीटर आगे जो पॉइंट्स हैं उनके पीछे तक आपकी बॉल्डनेस रिसीड हो गई, आपकी एंटीरियर हेयर लाइन पीछे जा रही है। ग्रेड 3 तक आते आते आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है और अब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। ये उन लोगों में नहीं होता, ये इंसाइट उन लोगों में नहीं आती कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है जिनका ये वाले बाल इंटैक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट फ्रंटल फोरलॉक, यानी फ्रंट का आगे के बाल हैं, तो अगर साइड के हल्के भी हो गए तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, वी विल गो टू द डॉक्टर लेटर, आई एम एबल टू कोम माई हेयर, माई लुक्स आर ओके, बिकॉज आपका आगे का लुक ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब अगर आपका एम शेप और रिसीड कर गया लेकिन बीच में अभी हेयर हैं अच्छे खासे, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा वर्टेक्स थिंड आउट हो गया, तो आप ग्रेड 4 में आ जाओगे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉरवुड हैमिल्टन ग्रेड्स ऑफ हेयर लॉस, जिसको हम NW सिस्टम बोलते हैं, नॉरवुड हैमिल्टन हेयर लॉस स्टेजेस। अब ग्रेड 3 के साथ भी आपका वर्टेक्स खाली हो सकता है। ऐसे केसेस में आएगा ग्रेड 3 यानी डीप एम शेप प्लस वर्टेक्स, यानी 3V साथ में, बिकॉज वर्टेक्स भी चला गया। अगर एम के बीच के हेयर जो आपके अच्छे होने चाहिए थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आप ग्रेड 3A में आ जाओगे, यानी एंटीरियर आगे के बाल भी जा रहे हैं। एनीवेज, ग्रेड 4 में वर्टेक्स भी आपका हल्का हो गया, लेकिन बीच के आपके बाल काफ़ी बचे हुए हैं। अगर ये बीच के बाल धीरे से और हल्के हो गए और पतला हो गया ये बैंड जो आपके सिर के ऊपर है, तो आप ग्रेड 5 में आ गए। 4 के बाद 5 और 4 में बीच के बालों की बैंड की विड्थ का डिफरेंस है। थोड़े से पतले बैंड के बाल बचे हुए हैं, थोड़ा वर्टेक्स खाली हो गया है, आगे काफ़ी खाली हो गया है, तो आप ग्रेड 5 में आ गए। अगर ग्रेड 5 के साथ आगे के बाल बहुत सारे चले गए तो ये 5A हो गया, यानी एंटीरियर भी है साथ में। और अगर पीछे वर्टेक्स के बाल बहुत सारे चले गए तो 5V हो गया। अगर बीच का बैंड जो हेयर का है वो पूरा चला गया तो आप इवेंचुअली ग्रेड 6 में आ गए। ग्रेड 6 इज लेस बिकॉज आपके साइड्स के बाल अभी भी हैं और पीछे के बाल भी उतना नीचे नहीं गए, लेकिन फ्रंट और टॉप खाली हो गया, देन यू आर ग्रेड 6।
Again, if it does not stay here and you keep on losing hair, or somebody in your family is keeping on losing more and more hair, eventually you land up in grade 7. 7 is the highest stage of hair loss, in which you are left with sides, parietal, along with occipital. तो आपका horseshoe pattern of hair है आपके पास, but आपका front, mid, vertex to the extent कि जो transition zone है उसके भी नीचे तक जो आपका पीछे whirl था वो भी चला गया. Then you have now entered grade 7. Now, people usually who present to the doctor, it's not that they fall in particular one grade only. Sometimes we say you are grade 3 nearing grade 4, or you are grade 5 nearing grade 6. So this happens. Now, why this is important? Because your treatment may depend upon your grade, along with your age, along with your family history, along with comorbidities, any metabolic problem, any surgical problem, and so on. So it is important for us doctors at least, that we know the grade of your hair loss. Now, apart from that, there is something called DUPA. What is DUPA? DUPA is thinning of hair throughout the scalp. And there is something called patterned alopecia. This is patterned, but there is something called diffuse unpatterned alopecia, which is DUPA. Again, there is fibrosing alopecia of pattern distribution, which is something new now. It is FAPD. ऐसा लगेगा कि आप नॉर्वुड हैमिल्टन में फॉल कर रहे हो, बट आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो एक हार्मोनल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ना हो करके ये एक फाइब्रोजिंग एलोपेशिया होगा, यानी आपके बालों की जड़ें जो हैं वो फाइब्रोज होती जा रही हैं, साथ में ख़त्म होती जा रही हैं. तो आपको दवाइयों का ज़्यादा असर नहीं आएगा और आपका हेयर का जो पैटर्न है वो एक पैटर्न्ड एलोपेशिया की तरह से जा रहा है. सो दिस इज समथिंग न्यू विच वी डॉक्टर्स आर सीइंग नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर asking our patients to get biopsies done, and we are doing trichoscopies in all the patients who come for hair loss. We are doing dermoscopy as well, because उसके अपने कुछ points हैं, कुछ pearl points हैं which help us understand कि आपका प्रॉब्लम डायग्नोसिस क्या है और पैटर्न क्या है. सो somebody is asking a question. I work from Agra. First time hair transplant, 100% result, 1 year complete, 50% hair loss. Second time hair transplant, price, madam, I'm coming clinic, madam. So I think you want to have a consultation for hair loss because you feel that your hair have reduced after your first transplant. So as I was saying just now, you are a candidate jinka for whom we would like to do trichoscopy as well as dermoscopy and find out the reason for your hair loss, and then proceed with the treatment part, because it is very important that diagnosis should be done and then treatment should be done. Not every patient can be considered a candidate for hair transplant, because अगर फाइब्रोजिंग एलोपेशिया है या फिर एलोपेशिया एरियाटा है, तो उन केसेस में, इन दोज केसेस, इट इज़ the hair transplant usually is not the treatment of choice, because then in alopecia areata the autoimmune problem which you have, because of which you are having coin like patches on the scalp, ऐसे गोल गोल सिक्के जैसा पैटर्न अगर हो गया है और वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप this type of alopecia is due to autoimmune disorder, and if we put more grafts in these areas, you will be losing these grafts because of the same autoimmune disorder. And then because we did a hair transplant, you would be losing hair from your back donor area also. So it's a lose-lose situation.
Therefore, if somebody is diagnosed with alopecia areata, hair transplant is not the treatment of choice. Again, if you have fibrosing alopecia, you are diagnosed with it, and it is active, it is not quiescent, it is not dormant, but it is active, then you are having a problem for which the treatment is not hair transplant. What I want to suggest here is that your grade and diagnosis should be done before we do a transplant for you. Now, let me educate you with something else. There can be other reasons for hair loss also, like if somebody is taking some medication. There are medications which can lead to hair loss. Like if somebody is taking an anti-acne medicine, which is tretinoin, isotretinoin. So in those cases, they might have hair loss. Then there are certain anti-epileptic drugs and other kind of drugs, anti-cancer drugs, which lead to hair loss. Then if somebody is having a chemotherapy for cancer or radiotherapy, localized radiotherapy, then they may lose hair again. Now, one more very important reasons nowadays for hair loss is vitamin D deficiency. Now, these kind of hair losses, you will not find a pattern in this. They will be like unpatterned, generalized thinning of hair, and then continuous shedding of hair. So vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiencies, various other nutrient deficiencies like zinc, selenium, these deficiencies can lead to hair loss. One very important factor which again can lead to generalized hair loss is stress. By stress, I mean not only anxiety and being stressed all the time, but I mean a bad day and night system in which you wake up late in the morning, or even you wake up in the afternoon because you go to sleep in the early hours of night, in the morning rather. So because your body has certain rhythm, which is called circadian rhythm, and you do not follow this rhythm and you have your own sleep awake cycle, what happens? The melatonin hormone, the adrenal hormones, various other hormones which have a circadian rhythm, they like to get in your body secreted at certain times of the day and night. But if your sleep awake pattern does not coincide with it, then your body is confused. When should I secrete these hormones? So in that way, it leads to stress, that it leads to hair loss. So one of the important theories nowadays is that not only genetic factors and stress, but also epigenetic factors are there which may lead to hair loss. Stress is one of the causes of epigenetic factors. Besides various nutrients, various nutrient deficiencies, various hormonal imbalances, all of them contribute to epigenetic factors of hair loss. Now, we've covered the hair loss pattern in males. Let me now educate my female clients as to what is the reason, as to what is the pattern of their hair loss. Females में hair loss कैसा दिखता है? So if a female is having a female pattern hair loss, तो उसका सबसे easy and best method of criteria of staging is Ludwig pattern. So if we try to part the hair in the middle, बीच में अगर हम मांग निकालें, तो अगर बीच के एरिया के पैरेलल में आपको लगता है कि बहुत चौड़ी मांग हो गई है, then you are suffering from Ludwig pattern grade 1. अगर आपको लगता है कि एक सर्कल जैसा थोड़ा एलिप्स जैसा बन गया है, then you are suffering from Ludwig pattern grade 2.
और अगर आपको लगता है कि एक बहुत बड़े एरिया में आपका स्कैल्प दिखने लगा है, इतना दिखने लगा है कि हेयर उसको ठीक से कोम नहीं कर पाते, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूडविग पैटर्न ग्रेड 3. Because these are female pattern hair losses, they have a relation with your body hormones. Sometimes these kind of patients suffer from PCOD, polycystic ovarian disease, because the hormones in PCOD are in direct correlation with your hair loss. Even if you are not suffering from PCOD, if you are having a female pattern hair loss and you fall in any of the Ludwig patterns, it is very wise to see your doctor, get a medical treatment. And because for a female, the show of scalp is very depressing, then the treatment which you can have is not only medical treatment, along with PRP or mesotherapy, or nowadays a very good thing is GFC, which is growth factor concentrate, but also we can have hair transplant for the frontal area and scalp micropigmentation for the area at the back. Why I am not saying hair transplant for whole of the area like we do in males? Because number one, जब हमारे आगे के बाल इतने कम होते हैं तो फीमेल्स में देखा गया है कि पीछे के बाल भी बहुत पतले और हल्के मिलते हैं. ऐसे केसेस में पीछे भी हमको खाली नहीं करना. वी वुड लाइक टू have a good growth at the back also. At the same time, we would like to cover our front and top of scalp. तो a very good method is कि हम यहाँ पर बाल बढ़ाएं and then we comb them backwards such that after doing scalp micropigmentation, यानी medical ink की तरह medical ink लेकर with a very specialized machine and needle, we try to make follicular pattern of dots. जो दूर से ऐसा लगता है जैसे बाल उग रहे हैं, बट दे डोंट हैव वॉल्यूम. सो व्हाट यू डू, यहाँ जो बाल लगाकर हमने वॉल्यूम बढ़ाया उसको आप पीछे करके कोम कर लीजिए. सो दिस पैटर्न ऑफ योर हेयर कोम्बिंग विल एक्चुअली camouflage any of the hair loss which you are having. आपको अगर स्कैल्प शो से प्रॉब्लम है तो दिस इज़ अ टाइम टेस्टेड वेरी गुड मेथड फॉर ऑल द फीमेल्स जिनको भी स्कैल्प शो का प्रॉब्लम है और उनको लगता है कि सब लोग उनका बॉल्ड स्कैल्प ही देख रहे हैं क्योंकि बाल ही इतने नहीं बचे कि वो स्कैल्प को छुपा सकें. सो बाय टुडेज video which I'm doing live, I would like to send this message to everyone who is listening or who will listen later on, especially females, that agar scalp show hai, there are methods which can help you. There is a specific hair transplant which can help you. It can be long hair transplant also, कि हमने लंबे बाल लगा दिए, छोटे बाल नहीं लगाए, लंबे बाल लगाए जिससे आप तुरंत से अपना स्कैल्प कवर कर सकते हो. थोड़े से उसमें से हेयर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में गिरेंगे जिसको शॉक लॉस बोलते हैं, बट देन अगेन दे विल कम आउट. और पीछे के बॉल्ड एरिया के लिए हमने स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन कर दिया. अगर वॉल्यूम पीछे भी चाहिए तो एक सेकेंड सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया. सो देर इज़ नो नीड टू लूज हार्ट. देर इज़ अ solution for every problem. As they say, every problem comes with a solution of itself. And for males also, regardless of the stage of your hair loss, you can always approach Saraswat Hospital Clinic, Saraswat Hospital here in Agra, because we have the facility of doing trichoscopy for you, by which we can find out कि आपके पीछे के बाल कैसे हैं, आपका डोनर एरिया कैसा है, आपके ग्राफ्ट्स कितने हैं पीछे, किस डायमीटर के हैं, जब उनका ट्रांसप्लांट होगा तो वो कैसे लगेंगे, आपका जो जहाँ ज़रूरत है वो एरिया कितना है, कितने ग्राफ्ट्स हमारे पास हैं और कितने हमको लगाने हैं. अगर वो कम पड़ते हैं तो क्या हम बियर्ड से ले सकते हैं या हम बॉडी के दूसरे एरिया से ले सकते हैं, जिसके लिए हम फर्दर एनालाइज करेंगे टॉर्सो डोनर इंडेक्स.
देन डर्मास्कोपी करके एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है हेयर में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फाइब्रोजिंग एलोपेशियाज बहुत कॉमन हो गए हैं अलॉन्ग विद नॉर्मल मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो क्योंकि इन फाइब्रोजिंग एलोपेशियाज को डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट है, कभी कभी हमको बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट मेथड्स, जिसमें हार्वेस्टिंग मेथड में FUE with a very good machine which is low torque, low RPM, जो आपके हेयर रूट्स को खराब नहीं होने देगी, और उस मशीन में काउंटर होता है, तो आप देख सकते हो कि भाई मेरे इतने ग्राफ्ट्स निकाले गए। और जब स्लिट्स हम बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, तो उनका एंगल, उनकी डेप्थ, उनका डायरेक्शन और उनकी डेंसिटी, इन सब पे चेक होता है। Just before this live, I had a meeting with ISHRS, different doctors from all over the world. कुछ शिकागो से थे, कुछ फिलीपींस से थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे, then कुछ मिडल ईस्ट से थे. So we had a meeting, and then we found out that it was a patient safety subcommittee meeting of ISHRS. So in that हमने ये conclude किया that we will take all the possible steps to educate all of you that get your hair transplant done from somebody who is known to do it, who is qualified enough to do it, जिनके credentials हैं कि आपका hair transplant वो कर सके। ऐसे लोगों के, ऐसे सेंटर्स पे जाइए जिनको आपकी सेफ्टी के बारे में पता है। So coming to one of the questions, there is somebody who is asking, is there any side effect of minoxidil? So I would like here to say that we have a very good video on side effects of minoxidil. Please do watch that video on Saraswat Hospital Hair Transplant YouTube channel. अभी मैं आपको थोड़ा ये बता सकती हूँ कि मिनॉक्सिडिल लगाने से कभी कभी किसी किसी को थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, रेडनेस हो सकती है, बट ये सब बहुत टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको मिनॉक्सिडिल से कोई पैल्पिटेशन जैसा नहीं हो रहा, जो कि 0.1% केसेस में होता है, तो आपको फिर इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉल्यूशन फॉर हेयर लॉस। सो और कोई साइड इफ़ेक्ट इसके यूजुअली नहीं देखे गए हैं। अगर इनिशियली आपको हार्ट रिलेटेड नहीं हो रहा पैल्पिटेशन, तो फिर आप यू कैन वेरी सेफली यूज दिस। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ रिगार्डिंग द हेयर लॉस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask us, otherwise I'll be summing up. Some just last question, some minoxidil is causing hair fall. Why? See, if you start minoxidil, there is something called paradoxical hair loss. First 15-20 days you can suffer from hair loss because minoxidil brings your hair from telogen phase to anagen growing phase. So that way it will improve the quality of hair, but you can have paradoxical hair loss in the initial days. Somebody says he started hair loss after creatine. He was doing heavy exercise and was taking mass gainer for 7 months powder and 20 days of creatine. Use my hair fall went boom. So there are no studies which suggest that creatine causes hair loss, but there are so many studies which suggest that the protein powder which you take, it causes hair loss. So it may be a coincidence that you started having hair loss because when you started creatine, but with most probabilities, the culprit here would be your protein powder and the heavy exercise you are doing. So I'm sorry, I won't be able to take any more questions. We can take these questions when we go live next Friday. Same channel, same place. Do save your questions for further. See you then.